Hi, good afternoon, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we will be discussing the questions from August 2024 examination. So आज वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के बेसिस पर. यूनिट 2 इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजिटल. So for every question, I'll provide the detailed explanation. Although इस unit से जो भी questions आए थे, those were very easy, and we know that this time the cutoff was high because the paper was actually expected and it was easy. तो चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं आज वाले क्वेश्चंस क्या है. आई हैव फ्यू अनाउंसमेंट्स फॉर यू, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे जो अनाउंसमेंट्स है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो डिजिटल में पूछा गया है. डिजिटल का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज फॉर मिनिमाइजेशन. सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन के मैप, दैट इज नॉर्थ मैप. यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में. आपको इन स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर सीक्वेंसिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग और मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द के मैप. So this is saying that out of the following steps in the proper sequence for simplifying a boolean function, आपको कोई boolean function को solve करना है, simplify करना है using k map, तो आप उसमें क्या steps follow करेंगे. So 4 steps are given to you. आपको इनको arrange करने हैं. Just give it a try. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपके पास फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं. If we have 2 variables, then we are going to create a k-map of 2 variables. अगर 3 variable है तो हम k-map बनाते हैं with the 3 variables. तो that means सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें k-map बनाना है for the given boolean function. बुलियन फंक्शन में से आप आइडेंटिफाई करोगे कि फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. सो इफ इट्स 4 वेरिएबल्स, देन विल क्रिएट अ 4 वेरिएबल के मैप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द के मैप. फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 वेरिएबल के मैप है. 4 वेरिएबल मींस 16 cells will be there. I'll be creating a K map with 16 cells. करेक्ट. सबसे पहले हमने के मैप बनाया. ये कौन सा स्टेप है? दिस इज सेइंग दैट statement B says that draw the k-map for the given boolean function. आपने सबसे पहले k-map बना लिया. This is step 1. तो on the basis of this, मैंने हमेशा बताया जब ऐसे sequencing वाले या match the following वाले question होते, keep on eliminating the option. तो step 1 में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? B. तो option 2 और 4 eliminate हो गया. k-map बनाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं फॉर द गिवन फंक्शन. मतलब कहाँ पे 0 आ रहा है, कहाँ पे 1 आ रहा है. सो इन द सेल्स वी आर गोइंग टू मार्क द zeros and ones. फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग 1 1 हियर, 1 1, और बाकी सारी जगह पे मेरे पास 0 आ रहा है. समथिंग लाइक दिस. ओके, मुझे एसओपी में अगर के मैप बनाना है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई विल फॉर्म द क्लस्टर्स. हम यहाँ पे क्लस्टर्स बनाएंगे. किस साइज के? मैक्सिमम साइज के, क्योंकि जितने ज्यादा साइज का क्लस्टर बनेगा उतने कम लिटरल्स यूज होंगे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्लस्टर. सो वी आर गोइंग टू so we have transferred the truth values in the k map. So that is step 2. Anyhow, on the basis of that, we have eliminated the option 3 as well. तो आपके पास already answer आ चुके हैं. But let's finish this. आपने truth table से values को k map में transfer किया, फिर आप clustering करते हो, and after the clustering grouping करने के बाद आप नाम लिखते हो. You are going to write the simplified boolean expression. Identify and group the largest possible clusters of ones. वंस का क्लस्टर कब बनते हैं? जब आप एसओपी में एक्सप्रेशन लिख रहे हो. जीरोस का क्लस्टर बनता है आप जीरोस को कंबाइन करते हो इफ यू हैव टू रिटर्न द एक्सप्रेशन इन द पीओएस फॉर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम. सो जब मैंने के मैप डिस्कस किया था, आई होप यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट द एसओपी फॉर्म एंड द पीओएस फॉर्म. सिंस हियर nothing is said, so this is saying that we are forming the largest possible clusters. Clusters form करने के बाद इन clusters को हम नाम दे देते हैं. So write the simplified boolean expression from the grouped cluster. So this will be the last step. So here we are getting B, D, A and C. B, D, A, C is option 1. So this question was asked in August 2024.
लेटेस्ट एग्जाम से शुरू कर रही हूँ, सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस एक एक करके हम डिस्कस करें। इससे पहले हम डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, इन सब के डिस्कस कर चुके हैं। इन टुमारो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 9 दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो अगस्त 24 में पूछे गए है ना। चलिए, let's talk about the next question that was asked in August 2024. तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है आपको। लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कंप्यूटिंग सिस्टम्स दिए हैं, लिस्ट 2 के अंदर आपको वर्किंग और आउटपुट आइडेंटिफाई करना है। So computing systems में we are given with half adder, decoder, register and the main memory. So what is the responsibility of all these computing systems? Half adder का क्या काम होता है? Adder means this is used for the addition. Match the following में मैंने हमेशा बताया कि बेटा जिसको लेकर आप श्योर हो, या फिर जब आप फंक्शंस और ग्रुपिंग देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको हिंट मिलेगा। So it has n input and 2 output, 2 raised to power n output. अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। n inputs और 2 raised to power n outputs किस में होती है? It's possible in decoder. So this is for decoder. CPU स्टोरेज यूनिट, सीपीयू के अंदर जब आपको कोई डेटा स्टोर करवाना होता है तो किस में स्टोर करवाते हो? ऑल्दो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, वी हैव द मेमोरी, systems memory is used to store the data. We have main memory, cache memory, secondary memory, different types of memories available. But specifically अगर CPU के अंदर आपको डेटा को स्टोर करवाना है या फिर रिजल्ट को होल्ड करवाना है, वो किस में स्टोर करते हैं? In the registers. CPU is having some uh, registers available, जिसमें से एक हमारे पास program counter है, which is going to hold the address of the next instruction to be executed. We have the default register to hold the data or the result, that is the accumulator. So it's the registers which are going to store the data in the CPU. So our registers are going to point to 2. This is pointing to 1. Used to store the program at the runtime. किसी भी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, it should be available in the main memory. अगर आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, obviously you cannot execute it. So this is the responsibility, this is the working of the main memory. So this is coming out to be, and for the adder, adder का क्या काम होता है? This is half adder. Half adder means 2-bit addition circuit. If it's the full adder, then in that case we have the carry as well. तो आपके पास 3-bit addition होता है in case of full adder. So this is for the half adder. So for A, this is coming out to be 4. So on the basis of this, it is eliminated. For B, it is 1, then 2, and then 3. So correct answer for this question is option 3. Simple. ये भी काफी simple question था. This was also asked in August 2024. Now let's move on to the next question. Here we are given with some special set of registers. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, program counter. Program counter is used to hold the address of the next instruction. So you are given with some statements, and आपको यहाँ पे बताना था कि जो ये 4 statements दी गई हैं A, B, C, D, इन चारों statements में से कौन सी statements correct है? So choose the correct answer from the options given below. Consider the following statements regarding the special purpose registers. हमारे पास कुछ special purpose registers है. So फटाफट से अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखिए. इस केस में आपको कोई एग्जीक्यूशन नहीं करनी है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है. You just need to identify that what statements are correct and which of the given statements are incorrect. Can you identify that what statements are correct? I want you to write your answer in the chat section. This is saying that program counter keeps the track of the next instruction to be executed. 100% this statement is true. ये statement क्या है आपके पास? This is true. Instruction register holds the address of the first instruction to be executed. Instruction register क्या hold करता है? ये एक instruction को hold करता है. Instruction के अंदर आपके पास opcode होता है. You have the address fields, that is the source address, destination address. Depends on whether that is 0 address instruction, 1 address instruction, 2 address instruction, or so on.
So instruction register never holds the address of the next instruction or the first instruction. Instruction register instruction को hold करते हैं. So this statement is false. Accumulator holds the output of ALU. This statement is true. अभी मैंने mention किया था accumulator is the default register in the CPU that is going to hold the source value. जो भी आप source दे रहे हो, source data. अगर एक ही register चाहिए तो definitely it will be the accumulator. अगर दो registers चाहिए, one of them will be the accumulator. And after the execution, the result will be available in the default register of the CPU, and that is the accumulator. So we can say that accumulator holds the output of the ALU. This statement is also true. Very good afternoon, Shubham. Then statement D is saying that program counter keeps the track of only the first instruction of the program. प्रोग्राम काउंटर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का ट्रैक रख रहे. 100% द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज हमने यहाँ पे अभी हमने पॉइंट ए में डिस्कस किया कि प्रोग्राम काउंटर holds the address of the next instruction to be executed. It holds the trace, so that is the address of the first instruction. जैसे first instruction execute होती है, load होती है, immediately it gets updated and it starts pointing to the address of the next instruction. So statement A and C is correct. Statement A and C is correct. So correct answer for this question is it's option 1. Is this clear? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिजिटल. So here you are given with the different types of counters. Again, match the following. Matching वाले बहुत सारे questions आए थे अगस्त वाले एग्जाम में, August 2024. So you are given with the different types of counters. A list of counters is given to you, and you have to identify its uses or its working. So identify that what will be the correct matching. Take 30 seconds, analyze it, and थोड़ा सा relate करने की कोशिश करोगे, definitely you'll be able to find out the correct answer. N-bit ring counter, synchronous counter, asynchronous counter, and decimal counter. सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या है? सारे के सारे काउंटर, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज्ड है. और ये कैसे सिंक्रोनाइज होंगे? विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक. सो व्हिच that clock, single clock is applied to all the flip flops. That means the clock which is used here is the universal clock. So synchronous counter uses the universal clock. डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल नंबर जो आपके पास 0 to 9 है. So decimal counter क्या करेगा? काउंटर का काम होता है to count the states. That is the basic meaning of the counter. So decimal means numbers 0 to 9. तो decimal counter क्या करेगा? It will count the states from 0 to 9. B के लिए 1 आया, D के लिए 3 आया, D के लिए 3. So option B cannot be the answer. B के लिए it is 1. So for B it is 1. So that means A cannot be the answer. So I'm eliminating the options as well. Now for n-bit ring counter, if we have n-bit ring counter, अगर n bits हैं, then it will be counting exactly n states. So n-bit ring counter, because ring counter के अंदर अगर आपके पास n bits हैं, then it will be returning n states. N bits means n flip flops. So it is counting exactly n states. So A के लिए it is 2. And asynchronous counter में क्या होता है? The external clock is only applied to one flip flop, और बाकी सारे flip flops की जो clock होती है, that depends on the output of the previous flip flops. So asynchronous counter main flip flop is applied to first flip flop only. So this is nothing but for C it is coming out to be 4. So this is incorrect. Correct answer for this question is it's option 3. I'm so sorry. I hope that this is clear. तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो एक क्वेश्चन किए जिसमें आपको सीक्वेंसिंग करनी थी, दो क्वेश्चंस मैचिंग वाले डिस्कस किए, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए in which you have to identify the correct and the incorrect statements.
Before moving on to the next question, there is a good news for you guys. We are launching our foundation batch for June 2025, क्योंकि June 25 will be the next examination अभी दिसंबर वाला होने के बाद. Although मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में it's difficult कि एग्जाम होगा because अभी तक notification is not out. So we have launched the foundation batch. Dates are announced. So it will be starting from 11th of November, so that we get enough time, 11th of November 2024. So quickly you can enroll yourself because currently the sale is also going on. Kitna off milega aapko, I'll let you know in some time. And also currently the booster batch जो लोग December 2024 वाले examination पे target कर रहे, we have already launched the booster batch जिसमें हम quick revision कर रहे है ना. We'll talk about this. I'll give you more details जो आपके लिए beneficial हो सकते हैं after discussing few more set of questions. Here we are given with some statements related to combinational and the sequential circuits. Combinational circuits और sequential circuits से related आपको यहाँ पे कुछ statements दी हुई हैं and you have to identify which of the statements are correct. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल एंड द सीक्वेंशियल सर्किट्स. इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वी सेड दैट there is no memory component. That means the output depends on the given input only. क्योंकि कोई मेमोरी कंपोनेंट ही नहीं है, प्रीवियस स्टेट पे क्या आउटपुट आई है वो याद रखने के लिए सब मेमोरी कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड. इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देयर इज नो मेमोरी कंपोनेंट. No memory component means output depends on the present input only, on the current input only. In sequential circuits, memory component is there. That's why we are using the flip-flop. Flip-flop is used to store one bit of the data. So memory is there. तो इसीलिए फ्लिप फ्लॉप्स यूज करके अगर आपको मल्टीपल बिट्स को डील करना है, देन वी आर यूजिंग मल्टीपल flip flops connected in some manner, so that forms the registers. So memory is present in the sequential circuit, so definitely it can consider the previous output as well. But in case of the combinational circuits, अगर आपका system कुछ output generate कर रहे हैं तो उसमें previous output will not be considered. It will be purely dependent on the current input only. So it is saying that the output of the combinational circuits depends on the only current input. Combinational circuit में output सिर्फ और सिर्फ current input और present input पे depend करती है. 100% true because there is no memory component. Basic difference है, basic definition है combinational circuits की. Output of combinational circuit depends on both current input and the previous output. Previous output पहले क्या output आई थी उसके लिए memory चाहिए and there is no memory for the combinational circuits, so this statement is false. Output of the sequential circuits depends on current input only. No, this happens in combinational circuits, so this statement is false. Output of sequential circuits depends on the current input and the previous output. Previous output भी consider करते हैं, बिल्कुल 100% true है ये statement. So कौन सी statements correct है? It is statement A and statement D. A and D are correct. So correct answer for this question is it's option 2. Next question. This is from the COA. जो अभी हमने question discuss किया digital से था ये question, combinational circuits and the sequential circuits. Next question is from COA, Computer Organization and Architecture, asked in August 2024. So here you are given with 5-stage pipeline and आपको यहाँ पे clock cycles बतानी है, how many clock cycles are required to complete the execution of the given instruction. So we know that in case of the pipelining, let us assume that there are 5 stages. This is stage 1, stage 2, stage 3, we have stage 4 and stage 5. Correct? I'm basically constructing the space-time diagram
क्लॉक साइकिल्स ले लेते हैं. मैं पूरा टेबल नहीं बनाऊंगी बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस वन एज वेल. डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर. सो वी आर गिवन विद, here we have the clock cycles. I'm representing the clock cycles here. And we have the stages. This is stage one. Stages are given as the fetch stage, fetch, decode stage, execute stage, memory stage, and write back stage. So here we have the clock cycles. Clock cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वन आई. पाइपलाइनिंग क्या बोलते हैं? विदाउट getting the output for the previous stage, the new instruction is entering into the system. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है? Each stage takes one clock cycle to complete. Assume that there are no pipeline stalls. Pipeline stalls are the extra clock cycles created due to some type of dependency. It can be the data dependency or it can be the resource dependency. So there are no pipeline stalls created. That means बिल्कुल ideal pipeline work कर रहे. That means in every clock the instruction is moving to the next clock and the pipeline is initially empty. How many clock cycles are required to complete the execution of 10 instructions? First instruction आई, one clock cycle. Each stage takes one clock cycle. Instruction one ने stage one पे एक clock cycle लिया, फिर it is moving to the next stage. In the next clock, third clock में third stage पे आ गया, fourth clock में fourth stage पे आ गया I1, and in the fifth clock this is returning the output. जब इंस्ट्रक्शन वन, अब ये तो आपके पास नॉर्मल प्रोसेस है, अभी तक मैंने पाइपलाइन इंट्रोड्यूस नहीं किया. पाइपलाइन का मतलब क्या है? विदाउट, बिफोर गेटिंग द आउटपुट फॉर वन इंस्ट्रक्शन. जैसे इंस्ट्रक्शन टू डिकोडिंग स्टेज पे है तो उस टाइम पे स्टेज वन इज एम्प्टी. सो इंस्ट्रक्शन टू can be fetched here. Instruction 2. In the next clock, it is going here. Next clock, it is going here. Next clock, it is going to the next stage. So this way, it is moving. I'm getting the output. फर्स्ट स्टेज की आउटपुट, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए आउटपुट कहाँ पे मिली आपको? फॉर इंस्ट्रक्शन वन आउटपुट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स. 5 क्लॉक साइकिल्स मिल लगी पहली इंस्ट्रक्शन की आउटपुट के लिए. इंस्ट्रक्शन टू की आउटपुट आपको इमीडिएटली नेक्स्ट क्लॉक पे मिल गई. वन एक्स्ट्रा क्लॉक इज टेकन. एक ही एक्स्ट्रा क्लॉक क्यों लगी? क्योंकि जो बाकी की चार clocks required थी, those are shared with the instruction 1. वो sharing हो गई. Similarly, जब instruction 2 stage 2 पे है तो instruction 3 can be at the stage 1. Instruction 3 stage 2. Instruction 3 at stage 3. So this way will get the next output in the next clock. That means after instruction 1, इंस्ट्रक्शन 2 के लिए एक्स्ट्रा एक क्लॉक चाहिए. इंस्ट्रक्शन 3 के लिए एक्स्ट्रा 1 क्लॉक इज रिक्वायर्ड. प्लस 1, वी हैव टू आइडेंटिफाई टोटल कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगी. इंस्ट्रक्शन 3 के लिए एडिशनल 1 क्लॉक साइकिल इज टेकन. Similarly, for instruction 4, it is taking 1 clock cycle. Instruction 5, instruction 6, instruction जितनी भी instructions है, every instruction is going to share the first 4 stages with or the clocks required for the first 4 stages with some other instruction. कोई और instruction के साथ share कर रहे हैं. बाकी output के लिए 5th stage के लिए extra clock is required. So how many clock cycles are required here? It is coming out to be 1 plus 1 plus 1. हमने कितने times किया? 9 times. Why is it 9? क्योंकि instruction 2 से लेकर instruction 10 के लिए total 10 instructions were there. For the first instruction, it is taking the clock cycles equal to the number of stages. अगर 4 stages होती तो 4 clock cycles लगती first instruction के output के लिए. If there are 5 stages, it is taking 5 clock cycles for generating the output for the first instruction. बाकी 9 are the remaining instructions. So n minus 1 are the remaining instructions and each instruction requires 1 clock cycle. Correct?
into, so this is representing the number of clock cycles required. अगर टाइम पूछते तो आप क्लॉक साइकिल के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है that will be multiplied. So we know that the formula for calculation of the number of clock cycles is k plus n minus 1, where k represents the number of stages. मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिए, जिन लोगों को डेरिवेशन नहीं पता, although I had discussed this derivation in detail. So k is representing the number of stages in the pipeline. So in this case, the number of stages are 5. Anyhow, we have got the answer, that is 14. So if I substitute here, number of stages are 5. 5 stages are there. N is representing the number of instructions. So in this case, number of instructions are given as 10. So N is 10, 10 minus 1. These are the number of clock cycles required. तो आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते थे, और यू कैन सॉल्व इट मैनुअली एज वेल. अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ दे आर आस्किंग फॉर द time required, this is nothing but k plus n minus 1 into tp. Value of tp will be given to you in the question itself. So this is the concept of the basic pipelining. We do have the concept of the advanced pipelining, जिसमें हम stalls देखते हैं, how many stalls are created, and if some dependency is there, how to reduce the number of stalls. Stalls are nothing but these are the extra clock cycles. तो जितने ज़्यादा extra clock cycles create होंगे, definitely efficiency or performance उतनी down आएगी. So that is why we cover the concept of the advanced pipelining. Is this clear? Is this question clear to everyone? Let's move on to the next question. Now this is saying that arrange the given steps required for direct memory access. DMA के अंदर आपको कौन-कौन से steps चाहिए? You have to arrange them in the sequence. Initiate DMA transfer request, transfer data directly between the peripheral and the memory. That means the IO and the memory. Direct memory access means by default, the control of the system bus is under the control of the CPU. Because when we talked about the components of the system, we have the CPU. One of the major component is the CPU. Another component is the memory. And we have the peripheral devices, or let me call this as IO devices. अब यहाँ पे हम एक interface use करते हैं, because we know that the speed of IO devices is very slow as compared to the memory of the system. Speed is very slow. Memory is slower as compared to the CPU, and CPU is the fastest among all the components of the CPU. अब CPU जब execute कर रहे हैं तो in order to have the high performance and the efficiency, CPU की speed से data मिलना चाहिए, and let us assume that the data that needs to be transferred to the memory is more. Memory के अंदर आप data transfer कर रहे हो from the IO, and this system bus is by default under the control of the CPU. सिस्टम बस किसके कंट्रोल में? सीपीयू के कंट्रोल में. आपको डेटा ट्रांसफर करना है आईओ टू मेमोरी. तो इसका मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम बस का कंट्रोल है ये कुछ टाइम के लिए आईओ को मिल जाए. सो हियर वन इंटरफेस इज यूज्ड जिसको बोलते हैं डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. दैट मींस दिस पेरिफेरल डिवाइस wants to directly access the memory without the involvement of the CPU. तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए सीपीयू को सस्पेंड कर देता है. इट गेन्स द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस एंड ट्रांसफर्स द बल्क अमाउंट ऑफ डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीपीयू. अब यहाँ पे क्या बोले, सबसे पहले डीएमए क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सीपीयू को. क्या रिक्वेस्ट होगी? दैट इज होल्ड. होल्ड मीन्स कुछ टाइम के लिए अपनी एग्जीक्यूशन को होल्ड पे डाल दो एंड गिव मी द एक्सेस टू द सिस्टम बस. Transfer
the data directly between the peripheral and the memory. इससे पहले आपको क्या चाहिए, the processor grants, सबसे पहले क्या किया, DMA ने रिक्वेस्ट भेजी CPU को, DMA sends the request टू CPU कि मुझे सिस्टम बस का कंट्रोल चाहिए. सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी. अब इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट आएगी. CPU विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू द DMA. एक्नॉलेजमेंट ACK, जिसको हम बोलते हैं, here we call it as hold signal, and this is the HLDA. HLDA means hold के corresponding आपको acknowledgement मिल रही है. Processor grants the DMA control over the system bus. Processor ने, CPU ने control दे दिया किसको, DMA को. DMA controller completes the data transfer and signals the completion. So after getting the hold, after getting the acknowledgement means hold दे दिया. So this is nothing but, this is your step number. This is step number 1. Request initiate हुई. It is going to grant the request. Acknowledgement आ गई. Step 2. That means first of all will be having A, then C. जब acknowledgement आ गई, it will transfer the data directly between the peripheral and the memory. Data transfer हुआ. पूरा डेटा ट्रांसफर करने के बाद once the DMA controller completes the transfer, वापस से ये सिग्नल भेजेगा CPU को कि मेरी कंप्लीशन, मेरा डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है. नाउ यू कैन टेक द सिस्टम बस अंडर द कंट्रोल. सो दिस इज स्टेप 4. ऑल्दो ये लास्ट में आएगा, ये आपको यहीं से समझ में आ रहा है. इट कंप्लीट्स द डेटा ट्रांसफर, यानी कि डेटा ट्रांसफर के बाद आपके पास डी आएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी A, C, B and D. A, C, B and D. So correct answer for this question is it's option 2. Make sense? So this is the overview of the DMA. So ये आपको कुछ instructions given थी, कुछ steps given थे, which were on the basis of the DMA, that is direct memory access. I hope that ये clear है सबको. Let's discuss one more question. बाकी के questions हम लोग आज की master class में discuss करेंगे. So here we are given with the number. This is from the digital number system. Consider the given numbers 45 with the base y. Y is the base of the number. Some of the possible values of y are given below. हमें ये मालूम है कि अगर base 2 है, if I talk about the binary number system, base is 2, then what are the allowed digits? Binary number system. Base 2 means we are talking about the binary number system. So allowed digits are 0 and 1. Highest digit क्या है यहाँ पे आपके पास? Highest digit is, we can say that highest digit is 1. If we have the octal number system, base is 8, so allowed digits are 0 to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So highest digit is what? That is 7. If we have the hexadecimal, or let me take decimal first. For decimal means base is 10, so the allowed digits are 0 to 9. Highest digit is 9. So if here we are given with the number, अगर मेरे पास base r है, तो digits, allowed digits क्या होंगे? 0 to r minus 1. So highest digit will be r minus 1. अगर यहाँ पे मेरे पास highest digit 5 है, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? It can be y must be greater than 5. Equal to 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास बाइनरी है, बाइनरी के अंदर 2 नहीं आ सकता. डेसिमल के अंदर 1 0 is a combination of the digit 1 and 0, है ना? तो अगर हमने यहाँ पे बोला है कि हमारे पास हाईएस्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो इसका मतलब बेस मस्ट बी 6 और ग्रेटर देन 6. So it must be 6 or greater than 6. B, C and D. This is nothing but it is option 2. Pretty straightforward question. बेसिक कॉन्सेप्ट था. नंबर सिस्टम में जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं, जब हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. सो दिस वाज आल्सो द बेसिक क्वेश्चन. तो हमने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस जो अगस्त
4 में पूछे गए थे फ्रॉम द यूनिट 2. दीज वर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसीलिए कट ऑफ इतना हाई गया था, है ना. बट एनी हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स for the examination. So that is why we are launching the foundation batch for JRF and UGC NET. You can see here. So this batch is launched and the first class will be from 11th of November. Classes November se start ho jayegi. Why we are starting this much early? Because we want कि आपका पूरा का पूरा syllabus detail में live classes में cover हो. So in the foundation batch, we will be covering the paper, all the concepts of paper 1 and paper 2 according to the latest syllabus. So this batch is launched, and good news for all of you is from today we have the sale for next 2 days, that is Chhat Utsav. You know that छठ के पीछे की कहानी क्या है. This is related to सूर्य. So this is सफलता का सूर्य सेल, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 55% along with additional 40% plus success guaranteed. ये हम सक्सेस की गारंटी क्यों लेते? Because along with the foundation batch classes you get the booster classes as well. तो अगर आप फाउंडेशन लेते हो तो ऑलरेडी आप बूस्टर में एनरोल हो जाओगे. एंड जो लोग दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन द बूस्टर बैच because we recently launched the booster batch. In the booster we are having the revision classes and the live, जितनी भी classes जा रही हैं live में जा रही हैं, और revision में we are just not covering the theory, we are covering more and more number of questions, different types of questions, और जो concepts है उनमें और clarity आती है with the help of the questions. So all these are the live sessions. So you will get this booster classes just for 4,000 rupees because this will be valid till your examination date. It's not December 2024. अगर आपका एग्जाम जनवरी में होता है, this will be valid till January, जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट है. And in order to get the benefit of this sale, you need to use the coupon code that is Shefali S. मैंने हर स्लाइड के टॉप पर भी शेयर किया है. Just go through it. And apart from that, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक टिकर चल रहा है जिसके अंदर आप कूपन कोड देख सकते हैं. In the description box also this coupon code is given for you. And apart from that, if you want to target on June 2025, then also you can use this coupon code in order to get to get enrolled in the foundation batch at the discounted price. So grab this deal by applying the coupon code. So हर स्क्रीन में मैंने आपको हर स्लाइड पे भी दिए, just refer to it. And apart from that, on the alternate days of the week, we have the YouTube sessions on the YouTube channel Super Coaching UGC NET JRF by Testbook. Undoubtedly, we are covering all the important topics and the set of questions on the YouTube, but 100% syllabus, आपको मालूम है कि UGC का syllabus बहुत ज़्यादा है. So paper 1 and paper 2 पूरा complete नहीं हो सकता. So that's why you can enroll yourself for the foundation batch. YouTube की classes 1 PM पे होती हैं. Yesterday we didn't had the session because of some emergency. Otherwise we have the sessions on Monday, Wednesday and Friday. कल Friday है तो definitely I'll see you guys tomorrow as well. And corresponding to जो भी concepts या जो भी set of questions हम YouTube पे करते हैं, उससे related ही questions master class में होते हैं. मास्टर क्लास आज वाली यूट्यूब क्लास में हमने अगस्त 24 के यूनिट 2 के क्वेश्चंस किए हैं, तो आज वाली मास्टर क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो अगस्त वाले एग्जाम में पूछे गए थे. सो क्लासेस आर फ्रॉम मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है, you can ask those doubts in the Telegram group. Telegram group is on the top right corner of the slide. Apart from this, foundation batch, मैं paper 2 का schedule share कर रही हूँ. In the same way, daily we are having the classes for paper 1 as well. This is the schedule for paper 2. That is for the students, those who are writing the exam for computer science applications. Computer science applications. So if you are going to enroll yourself for booster, तो आपको foundation की classes भी मिलेंगी. In the foundation we have one session in the morning जो 2 hours का होता है.
So from today evening, I'm going to start unit 1, that is discrete structures. जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, so आज वाला दिन बहुत अच्छा है, सेल भी चल रही है, नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है. So join it as early as possible. So one session we have in the morning at 10 a.m. This is from 10 a.m. to 12 noon. 2 hours की class morning में होती है, and we have 2 hours session in the evening, that is 4 p.m. to 6 p.m. 6 p.m. This is for the foundation, and after that we have the booster classes. Booster classes अभी currently नवंबर के लिए बेटा हमारी वीकली alternate days पे जाएंगी. 3 classes will be there on Monday, Wednesday and Friday, 7 p.m. to 8:30 p.m. So today we are going to start with a new unit in the booster as well. अभी तक मैंने सिर्फ data structures discuss किए. So today we will be learning the concepts of algorithms. So today's session will be on complete revision of algorithms, and these sessions are on Monday, Wednesday and Friday. कल नहीं हुआ था, that's why we will be having this class today on complete revision of algorithms. तो structure is like this कि पहले हमारे पास complete revision आता है, जिसमें जो भी आपके टॉपिक्स है, जिन टॉपिक्स में आपको डाउट है, मैं उनको लाइव सेशन में दोबारा से रिपीट करती हूँ. उसके बाद 2 सेशंस आते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस का भी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती हूँ along with the other type of questions जो उस टॉपिक से बन सकते हैं. तो इस तरीके से हम यूनिट बाय यूनिट सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इन द बूस्टर. सो यू कैन enroll yourself for this one under the sale for just 4,000 rupees. Okay. So this is all from my side. So जितनी भी information मैंने आपके साथ discuss की है, everything is mentioned in the description box as well. Just go through it. And जो भी बेटा आप payments कर रहे हो, please don't do the payments over the calls or like that. तो सीधा सा, क्योंकि बहुत सारे frauds हो रहे हैं, सबसे easy method क्या है, आपको description box में link दिया गया है, go for it, pay now पे click करो and then only pay for the batch जिसके लिए भी आप enroll कर रहे हो, be it foundation or be it booster. And don't forget to apply the promo code. I hope session useful रहा होगा. आज वाली master class which will be at 3 p.m. we will be covering a few more questions from August 2024 on the basis of unit 2. Any doubts, any queries? तो अगर सेशन अच्छा लगा, आपको कुछ information मिली and you are getting the concepts, then don't forget to like the video, subscribe the channel. Just subscribe this channel Super Coaching UGC NET GRF by Testbook, क्योंकि इस टाइम पे currently हमारे जितने भी batches चल रहे हैं, these are in the English. ये इंग्लिश में जो एक और चैनल का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज इन द इंग्लिश. तो अभी इस चैनल पे कोई क्लासेस नहीं जा रही हैं. सो करंटली वी आर फोकसिंग ऑन दिस बैच. So go and subscribe the channel Super Coaching UGC NET GRF by Testbook. Like the video, share it with your friends and hit the bell icon to get the notifications. अगर आपका कोई भी डाउट है, मैं वापस से बता रही हूँ, you can share your doubt in the Telegram group. Link is given on every slide. And don't make the payments किसी के भी कहने पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेमेंट्स नहीं करनी है कि हम टेक्स्ट बुक से बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं. सो गो टू द ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑथेंटिक मेथड फॉलो कीजिए. इट विल हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, फॉर अस टू, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमने पेमेंट कर दी बट दैट इज नॉट रिसीव्ड. सो डोंट डू दैट. So this is all about this session. Thank you so much, guys. I'll see you at 3 p.m. in the master class. Till then, take care. Bye-bye.